गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया था 11 to 13 JPSC का, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लूँगा, जो इस प्रकार है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, व्हाट आर द फ्लॉज इन इंडियन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या खामियां हैं, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्धारित उपाय किए गए हैं। इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन सामाजिक, भौतिक और आर्थिक रूप से उपलब्ध हो, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसका अर्थ केवल खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं, बल्कि उसकी पहुंच और वहनीयता भी है। अब भारत इस देश में जहां लगभग 1.4 अरब जनसंख्या रहती है, गरीबी, कुपोषण और कृषि निर्भरता के कारण खाद्य सुरक्षा हमेशा एक केंद्रीय नीति रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं: पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उचित मूल्य की दुकानों से माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी जैसे अनाज सस्ते दाम पर वितरित। दूसरा, लक्षित पीडीएस 1997 में बीपीएल गरीब रेखा नीचे परिवारों पर केंद्रित। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 67% आबादी को प्रति माह 5 किलो अनाज सस्ती दर पर उपलब्ध करने का प्रावधान। चौथा, पोषण योजनाएं, मध्याह्न योजना व ICDS जैसी योजनाएं बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु। पाँचवा, बफर स्टॉक। भारतीय खाद्य निगम मूल्य स्थिरता व आयात स्थितियों के लिए भंडार बनाए रखता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की खामियां: मजबूत ढांचों के बावजूद खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की कई कमियां देखी गई हैं। पहला, पीडीएस में लीकेज। अध्ययन दर्शाते हैं कि 30 से 40% अनाज भ्रष्टाचार व कालाबाजारी में बर्बाद हो जाता है। दूसरा, पहचान संबंधी त्रुटियाँ। कई गरीब छूट जाते हैं, जबकि अबतर परिवार लाभ उठा लेते हैं। तीसरा, गुणवत्ता की समस्या। वितरित अनाज की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है। चौथा, राजकोषीय बोझ। खाद्य सब्सिडी के पर सरकार को सालाना 2-3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पाँचवा, भंडारण व बर्बादी। FCI के गोदामों में खराब व्यवस्था के बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाते हैं। छठा, पोषण की उपेक्षा। योजनाएं मुख्यतः गेहूं, चावल पर केंद्रित हैं। प्रोटीन, दाल, तेल बीज व सूक्ष्म पोषक तत्वों पर पर्याप्त ध्यान नहीं है। सातवां, क्षेत्रीय असमता है। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ बेहतर पीडीएस चलाते हैं, जबकि अन्य पिछड़ते हैं। आठवां में MSP पर निर्भरता। गेहूं चावल के अधिक खरीद से असंतुलित फसल पैटर्न, भूजल दोहन व पर्यावरण संकट उत्पन्न। सरकार द्वारा उठाए गए नीति यानी कदम। इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आबादी के 2/3 हिस्से को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का कानूनी अधिकार। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। प्रवासी मजदूरों को किसी भी राज्य में राशन उपलब्ध। तीसरा, पीडीएस का डिजिटीकरण, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पारदर्शिता। चौथा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। कुछ राज्यों में नगद हस्तांतरण की व्यवस्था। पाँचवा, भंडारण संरचना का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक गोदामों और साइलो निर्माण। छठा, पोषण सुरक्षा पहल, पोषण अभियान, मिड डे मील व पीडीएस के फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति। सातवां, कृषि सुधार, दलहन, तिलहन व फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन। आठवां, ई गवर्नेंस पहल, GPS ट्रैकिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण आदि। नौवां, आपातकालीन खाद्य सहायता। कोविड-19 काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया है। भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली ने अकाल व भुखमरी को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, और अब यह कल्याण के आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित ढांचे में विकसित हो चुकी है। फिर भी लीकेज, अबतर लाभार्थी, पोषण की कमी व राजकोषीय दबाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। आगे की राह में भारत को बेहतर शासन, पोषण विविधता, फसल विविधीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान देना होगा, तभी शून्य भूख, जीरो हंगर व SDG 2 सतत विकास लक्ष्य 2 को साकार किया जा सकेगा।
इंग्लिश का मॉडल इन इस प्रकार है. फूड सिक्योरिटी refers to a situation in which all peoples at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs for a healthy and active life. It is not limited to the availability of food grains but also includes accessibility and affordability. In India, where nearly 1.4 billion people live, food security has always been a core concern due to widespread poverty, malnutrition, and dependence on agriculture. The Public Distribution System (PDS), Midday Meal Scheme, Integrated Child Development Service (ICDS), and later the National Food Security Act (NFSA) 2013 have formed the backbone of India's food security. Key features of Indian food security system. First, public distribution system (PDS). Distribution of essential commodities like rice, wheat, and sugar at subsidized rates through fair price shops to targeted PDS introduced in 1997 to focus on below poverty line households. Third, National Food Security Act 2013 provides a legal entitlement to 5 kg of food grains per person per month at subsidized rates for 67% of the population. Fourth, nutritional programs. Schemes like midday meals and ICDS aims at improving nutrition among children and women. Buffer stocks. Food Corporation of India (FCI) maintains food reserves for price stability and emergency situation. Flaws in the Indian food security system program. Despite a strong institutional mechanism, India's food security framework faces several shortcomings. First, leakages in PDS. Studies reveal that 30 to 40% of food grains meant for poor households are diverted to black markets due to corruption and inefficiencies. Second, identification errors. Large section of the poor are excluded due to improper identification, while non-eligible families often benefit. Third, quality issues. Food grains distributed through PDS are often of inferior quality, discouraging people from using the system. Fourth, high physical burden. Subsidies on food grains cost the government nearly 2-3 lakhs crore annually, raising questions on physical sustainability. Fifth, storage and wastage. Poor storage facilities at FCI godowns lead to significant wastage of food grains. Sixth, nutrition gap. Food security programs mostly focuses on cereals, ignoring protein-rich food pulses and macronutrients, thereby failing to tackle malnutrition comprehensively. 7. Regional disparities. Some states like Tamil Nadu and Chhattisgarh implement PDS effectively, while others lag due to weak governance. 8. Dependence on MSP system. Excessive procurement of wheat and rice under minimum support price (MSP) has led to distorted crop pattern, groundwater depletion, and environmental degradation. Policy measures undertaken by the government recognize these flaws. The Government of India has undertaken several policy measures to strengthen food security. First, National Food Security Act 2013, legal entitlements to subsidize food grains covering two-thirds of the population, with a special provision for women, children, and senior citizens. Second, One Nation, One Ration Card enables portability of ration cards across states, benefiting migrant workers. Third, digitalization of PDS, use of Aadhaar-based biometric authentication to curb leakages and ensure rightful delivery. Fourth, direct benefit transfer. Pilots in some states provide cash transfer instead of food grains to reduce corruption and give beneficiaries choice. Fifth, a strengthening of storage infrastructure, creation of modern silos and warehouses under public-private partnership to reduce wastages. Sixth, nutritional security initiative, expansion of Poshan Abhiyan, fortified rice distribution under PDS and midday meal schemes to tackle micronutrients deficiency. 7. Agricultural reforms, promotion of crop diversification, pulses and wild seeds production to reduce our dependence on rice and wheat. 8. E-governance initiative, use of mobile application, online grievances redressal system and GPS tracking of PDS trucks for better transparency. 9. Emergency food security measures. During the COVID-19 pandemic, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana provided free additional food grains to nearly 80 crore beneficiaries.
The conclusion: food security in India has evolved from being a welfare-based approach to a right-based framework under the NFSA. While the system has helped prevent famine and starvation deaths, challenges like leakages, exclusion errors, nutritional deficiencies, and physical burden persist. To make food security truly inclusive and sustainable, India needs to focus on improving governance of VDS, promoting crop diversification, ensuring nutritional security, and reducing dependence on cereal-centric subsidies. Only then can the vision of zero hunger and SDG 2 Sustainable Development Goal on hunger एडुकेशन बी अचीव इन ए मीनिंगफुल मैनर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा, अपने कमेंट ज़रूर बताएं। धन्यवाद।